हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो जहां पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट शुड बी योर आंसर टू द क्वेश्चन व्हाई एमबीए। नाउ दिस इज अ क्रूशियल क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू एनी इंटरव्यू एंड ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेदर यू आर समवन विथ वर्क एक्स, वेदर यू आर समवन हु इज अ फ्रेशर जिसका कुछ बिजनेस मैनेजमेंट में कुछ बैकग्राउंड होगा, लेट्स से यू आर अ बीबीए और अ बीएमएस और अ बीकॉम ग्रेजुएट, और इवन इफ यू आर एन इंजीनियर, कुछ भी ग्रेजुएशन स्ट्रीम हो, कुछ भी बैकग्राउंड हो, वर्क एक्स हो ना हो, दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड। एंड ये क्वेश्चन पे काफी सारी चीजें हिंज करती हैं। द वे इन विच यू आंसर दिस क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ क्लैरिटी दैट यू हैव, द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू हैव, अवेयरनेस दैट यू हैव, ये सारी चीजें मैटर करेंगी व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस शॉर्ट वीडियो इज, पहले मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, एंड देन आई विल शो यू थ्री आंसर्स. One is a bad answer, one is an average answer that looks good to many of you or might look good to many of you, but is not really a good answer, and I will show you a good answer to this particular question. And हम लोग डिस्कस करेंगे on every slide as to what all things are working in favor of this particular student and what things are not working in favor of this particular student. कुछ भी अगर डाउट है कहीं पे, इफ यू हैव सम इनपुट्स ऑफ योर ओन एज टू व्हाई डू यू थिंक सम आंसर इज बैड और गुड और एवरेज, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर, एंड इफ यू आर अग्रीइंग विद व्हाट आई एम सेइंग, ग्रेट। तो स्टिल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट ऑल आर दी थिंग्स दैट यू शुड बी अवॉइडिंग, राइट? सो बहुत ही लोडेड क्वेश्चन होता है, बहुत ही सिंपल लगता है सुनने में, बहुत काफी लोडेड क्वेश्चन होता है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड अवॉइड और कीप इन माइंड इज, the question is not exactly why MBA. The question is why MBA for you. So at this point in time, why do you want to do an MBA? वो होता है question. The question is not why MBA. As you will see in case of the bad and average answer later in this video, you will see that a lot of times what people do is they will just Google or maybe use Chat GPT to figure out MBA क्यों करना है, and that will give you a generic answer, and फिर वो जाके वहां पे बोल देंगे. Now the problem with that answer is, if I replace you with anybody else and someone else were to say the same answer, तो इम्पैक्ट वही होता ना, इम्पैक्ट तो चेंज नहीं होता. So the answer has to be pertinent to you. You are not there to sell MBA as a career choice. You are there to tell them why you should be the one who should be doing an MBA at this point in time. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आगे जाके we will see it in the examples, but do keep this in mind. Try to make it as personal as you can. The second thing is, we are not here to understand your biography. ठीक है? सो कोई भी पैनलिस्ट होंगे ना, वो तुम्हारा बायोग्राफी सुनने के लिए वहां पे नहीं बैठे हैं कि पहले मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, फिर मैंने ऐसे किया, फिर मैंने वैसे किया. ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है. यू विल गेट हार्डली 1 मिनट 45 सेकेंड्स, 1 मिनट, 1 मिनट 15 सेकेंड्स, ऐसा कुछ टाइम पीरियड मिलेगा फॉर यू टू से योर वाई एमबीए आंसर. ठीक है? तो पूरा का पूरा अपना चीज मत बताना. द सेम थिंग इज पर्टिनेंट इन केस ऑफ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ वाला क्वेश्चन, विच आई विल कवर इन अ डिफरेंट वीडियो. बट यहाँ पे यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू टेल योर बायोग्राफी कि मैं पहले ऐसे था, फिर बचपन में मैंने ये किया था, वहां से मुझे एमबीए का थोड़ा नॉलेज आया, देन आई डिड समथिंग, देन आई डिड समथिंग. उतना सारा स्टोरी बताने का जरूरत नहीं है. द थर्ड थिंग, यू शुड नॉट रैम्बल. कुछ बताना चालू किया एंड देन यू गेट सो लॉस्ट इन दैट स्टोरी ऑफ योर्स दैट यू आर नॉट अराइविंग एट द वाई एमबीए वाला पार्ट एट ऑल. तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है. डोंट रैम्बल, राइट? मेक श्योर दैट योर आंसर इज कोहेरेंट. एकदम सही से एक चीज हो रहा है, फिर सेकेंड चीज हो रहा है, फिर थर्ड चीज हो रहा है, और फिर रिजल्ट आ रहा है. दैट इज द बेस्ट वे टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इसके अंदर बहुत ज्यादा वोकैबुलरी की जरूरत नहीं है. सो ऑल दोस ऑफ यू हु आर नॉट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी, राइट? स्पीच बहुत लोगों का अच्छा शायद नहीं होता. इट्स परफेक्टली ओके. यूज सिंपलर वर्ड्स. द आइडिया इज फॉर यू टू कन्वे टू देम कि भाई मुझे एमबीए क्यों करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सा वर्ड यूज कर रहे हो, कितना जार्गन यूज कर रहे हो, दैट इज डेफिनेटली नॉट समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू. इनफैक्ट बहुत ज्यादा जार्गन यूज करोगे ना, दैट्स गोइंग टू बी अ बिग टर्न ऑफ. तो वो बिल्कुल मत करना. over rehearsed delivery. A lot of people go on the other end of the spectrum, पूरा का पूरा रट लेंगे and then they will just narrate it, right? पूरा soulless narration जो होता है ना, जैसे हम देखते हैं कुछ bad actors होते हैं जो जाके सिर्फ डायलॉग बोल के आ जाते हैं. they just go and enunciate, सिर्फ बोल के आ जाते हैं, right? That is not something that you should be doing. बहुत ज्यादा rehearsed अगर लगेगा ना, then it's going to be a problem. So make sure that you are not sounding over rehearsed, because what happens if you sound over rehearsed, the panelists will catch you and they will ensure that
दे आर गोइंग टू आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नॉट फ्रॉम योर कंफर्ट एरिया। तो वैसे वो ट्राई सोचेंगे, वो पता करने की सोच वो पता करेंगे इफ यू आर गुड इनफ टू हैंडल अनसर्टेनिटी और नॉट। तो बहुत ज्यादा ओवर रिहर्स डिलीवरी मत करना, कीप इट नेचुरल, जैसे फ्लो में आएगा वैसे वैसे बोलते जाना। देन लॉजिकल फैलेसीज, अ लॉट ऑफ पीपल फॉल इनटू दीज थिंग्स। ठीक है, लॉजिकल फैलेसीज का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज ना लॉजिक नहीं है उसके अंदर, right? So a lot of people say that I was doing engineering but I was not happy with what I was doing, so I decided to go for an MBA. That is not logically correct. एक चीज मुझे करना पसंद नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरी चीज करूंगा। You should actively like to do that other thing, and that's why you are going ahead and opting to do an MBA. It's a big decision. Yeah? You are spending a lot of time, you are spending a lot of money, you are investing a lot of resources, you are putting your entire career on the line to pursue an MBA. बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। So logically fallacious नहीं होना चाहिए argument. So make sure that it is logically correct. मैंने ये किया, फिर मैंने रिसर्च किया, मुझे ये पता चला, बिकॉज ऑफ विच आई गॉट एक्साइटेड टू डू एन एमबीए, ये मेरे ट्रेड्स हैं, दैट encourage me rather to go for an MBA, and that tell me that I will be a good manager slash leader in my life. तो लॉजिकल fallacies को अवॉइड करना है at any cost. बैड माउथिंग अदर्स, मैं इस कंपनी में काम कर रहा था बट वहां पे मुझे प्रमोशन ही नहीं मिल रहा था, उस कंपनी के अंदर ग्रोथ ही नहीं था, माई बॉस वॉज अगेंस्ट मी, माई फ्रेंड्स गॉट promoted but I didn't get to work on the assignment, that's why I thought that I will equip myself with more skills and knowledge जिससे शायद मेरा भला हो लाइफ में। Not really a good way to handle that particular question. Bad mouthing others, bad mouthing institutes, saying that you lacked opportunities, not really a good thing to say in the interview. I am not saying that is impossible. ऐसा नहीं है कि every boss is perfect, every organization is good and everybody is thinking for your betterment. ऐसा नहीं है, I understand that. But blaming things that are beyond your control in that interview room does not really speak highly of yourself. This is an answer that you are constructing, so make sure that you're constructing it to showcase your strength, not others' weaknesses. ठीक है? तो others, bad mouthing others is not really a good idea. प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स अवॉइड, डोंट टॉक अबाउट ये रोल मुझे करना है ये कैंपस के अंदर, आई वांट टू गेट इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग थ्रू दिस कैंपस, बिकॉज इनवेरिएबली क्या होता है, पूरा का पूरा फोकस प्लेसमेंट्स पे चला जाता है। नाउ द फैकल्टी हु आर देयर, सो आई विल टेल यू वन स्मॉल थिंग दैट एग्जिस्ट्स इन बी स्कूल्स, मेनी ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स विल हैव नो आइडिया कि कौन से कंपनीज कैंपस पे आ रहे हैं, उन्होंने कौन से रोल्स ओपन किए हुए हैं, हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, द फैकल्टी विल नॉट नो दीज डिटेल्स। तो वहां पे जाके बोलना कि मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना है, फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना है, माइट इनवाइट क्वेश्चंस लाइक which companies come on campus with front end investment banking वाला प्रोफाइल, what does a front end investment banker do, and then वहां पे वो घुस जाएंगे ना, तो then you will be in big trouble. So placements के बारे में बहुत ज्यादा बात मत करना, the faculty are not in charge of the placements. ठीक है, faculty placement handle नहीं करेंगे वहां पे, so don't get into that thing कि नहीं I am here for placements. Placements is but an outcome of your MBA. तो MBA में 1.5 years 2 years में जो भी करोगे उसका इम्पैक्ट होगा फाइनल प्लेसमेंट्स के ऊपर। ठीक है, इट्स नॉट the faculty who is going to get you placed on campus. So don't talk about placements at all when you're talking about your why MBA wala answer. Second thing, glamorizing student bodies. A lot of people say that I will get into the cultural committee, I'll get into the finance committee, I'll get into the consulting club, I'll get into the media relations committee, I'll get into the placement committee, right? So why MBA के अंदर, how is an MBA from this college going to help you? इसका मतलब ये नहीं है कि student committees के बारे में बात करना चालू कर दो, because again the faculty might not exactly know which student committees exist, what is it that you're talking about, उनके flagship events क्या है, वो सब चीजें फैकल्टी को शायद पता नहीं होंगी और शायद इंटरेस्ट भी नहीं होगा, राइट? द फैकल्टी, द पैनलिस्ट्स, द टीचर्स हु आर देयर, दे आर देयर टू टीच अ सब्जेक्ट, राइट? एट द एंड ऑफ द डे उनको सब्जेक्ट नॉलेज होगा, बट कॉलेज के अंदर जो आउटसाइड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो चलते हैं ना, उनके बारे में उनको शायद बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होगा। सो डोंट गेट इनटू दो स्टूडेंट बॉडीज वाला डिबेट, या टेल देम दैट HUL line gets conducted on campus, that's why it's a prestigious institute because of which I want to join it. Might not really be the best idea to do that. ठीक है, focus on yourself, focus on why you want to do an MBA instead of focusing on what the college brings to the table. ठीक है, at the same point in time आगे जाके I'll talk about it in terms of why this particular college वाला video as well, but don't really get into teaching them their own subjects. Don't go and tell them that I want to learn consumer behavior. You never know who is sitting in the panel. अगर कोई प्रोफेसर होगा वहां पे जो कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाता होगा, लेट्स या पढ़ाती होंगी, you are going to be in big trouble because you might not be as good at the subject as they are. So then you are just
प्लेइंग सेकंड फिडल, राइट, पता नहीं कि क्या होने वाला है करके. देन द अदर थिंग इज इफ द फैकल्टी डज नॉट रियली लाइक दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट, ऐसे भी हो सकता है, राइट, नॉट एवरीबडी विल लाइक एवरीवन एल्स. You need not get into trouble by saying something that you don't mean. So keep it as broad as is possible, keep it as generic as is possible, but also make it personalized. तो यही ट्रिक है. That is why MBA is a very difficult question to answer during the interviews. अब ये तो बात हो गई क्या नहीं करना चाहिए. What should you be doing? First thing, make it personal. यार you have to have some personal edge to it. पता होना चाहिए कि ये आइडिया आया कहां से. Why is it that you want to do an MBA, right? Why MBA is a very good आंसर, राइट. बहुत ही अच्छा करियर चॉइस है. सबको पता है कि एमबीए करने से काफी करियर प्रोस्पेक्ट बढ़ जाते हैं, स्किल्स मिलता है, नॉलेज मिलता है, एलुमनाई नेटवर्क मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं. बट व्हाई डू यू वांट टू डू एन एमबीए? So understand what all examples are there from your past which indicate that you have it in you. You have that entrepreneurial mindset, let's say, or you have that mindset जहाँ पे you are thinking about a business in terms of strategy, in terms of finance, in terms of marketing. ऐसा कुछ अगर example है, so do share that kind of an example. That will make it personal. Then it will show a good एक origin story होना चाहिए. Suddenly you can't really say कि one fine day I got up and I became a superhero. नहीं, people don't like to listen to that, those kind of things, right? You have to ensure that there is some origin story that exists. तो वो अगर होगा, nothing better than that. Then add examples. Personalize कैसे करोगे? Add examples, because your examples are going to be your examples. वो बाकी किसी के examples नहीं होंगे. You can say that one fine day I got up and I looked at the newspaper and I saw that okay, a certain stock has gone up by 30% in a day. जो भी मतलब अगर कुछ limits वगैरह whatever, but it has something has happened there. I got curious about how exactly does this thing work. Then I went in and explored it a lot, and then I figured out कि अच्छा ऐसा कुछ होता है. That was the beginning of the journey that led me on a quest to explore finance. हो सकता है, राइट. नाउ इसको थोड़ा सा कंप्रेस करके अपने को बताना है. यू नीड नॉट रैम्बल एंड टेल देम कि ये डेट पे, ये पेपर के अंदर, ये पेज पे, ये स्टॉक के बारे में इतना परसेंट से ग्रोथ है, इतना करने की जरूरत नहीं है. जस्ट एंश्योर दैट देयर इज एन एग्जांपल दैट इज वेरी पर्सनल टू यू. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओरिजिन एंड एक्शन, एज आई सेड, origin story. Who doesn't like an origin story? Look at any superhero movie that you would have watched, right? Be it anything, Marvel, DC, कोई भी superhero story देख लो. अगर एक origin story होगी ना, you can relate to that character. You see that okay, this character was a normal human being, not exactly a super hero, but एक normal इंसान था, and something happened, and then suddenly this person decided or became a superhero. Now that is a very good story that you have, right? So origin and action. So origin is one part. चलो मुझे पता चला कि फाइनेंस इज समथिंग दैट आई शुड बी डूइंग, ये मुझे पता चल गया. बट मैंने उसके बारे में क्या किया? डिड आई डू समथिंग अबाउट इट, और एम आई सेइंग दैट ओके 2022 के अंदर मैंने सोचा मुझे फाइनेंस करना है, एंड 2025 के अंदर मैं बैठा हूं इंटरव्यू रूम के अंदर, उसके बीच में मैंने कुछ भी नहीं किया. इट डजंट वर्क दैट. You should have done something on your own as well that tells them that you are genuinely interested in the subject, you are genuinely interested in pursuing an MBA, you believe that you will be able to lead an organization. तो ये सारी चीजें उसके अंदर आती है, ठीक है. सो अंडरस्टैंड ओरिजिन एंड एक्शन, दोनों चीजें होनी चाहिए. सिर्फ ओरिजिन से काम नहीं चलेगा, और सिर्फ एक्शन पे अगर घुस जाओगे तो पीपल विल नॉट नो व्हाट योर मोटिवेशन इज. सो मेक श्योर दैट योर आंसर हैज अ बिट ऑफ ओरिजिन, अ बिट ऑफ एक्शन, दोनों चीजें होनी चाहिए. Typically 120 to 150 words is the sweet spot. Now if you start talking to a mirror, or if you just time yourself, you will see that 150 words बोलने के लिए लगभग 1 minute 5 seconds, or if you are a slightly faster or fast talker, maybe 50-55 seconds. So that is the amount of time that you are going to get to answer this particular question. So 120 words, 150 words is the sweet spot. अगर बहुत ही नहीं कर पा रहे हो अपने हिसाब से कंप्रेस, पुट योर आंसर इन चैट जीपीटी, आस्क इट टू कंप्रेस इट टू 150 120 वर्ड्स, एंड फिर उसको डिलीवर कर देना. 300 वर्ड का आंसर बोलने बैठोगे 2 मिनट, किसी का पेशेंस नहीं होता. पीपल फॉरगेट व्हाट यू हैव बीन सेइंग. तो जहां पे मतलब खत्म करोगे वहां से तुम्हारा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा. प्लीज डोंट डू दैट. मेक श्योर दैट यू कम टू द पॉइंट वेरी फास्ट, एंड 120 150 वर्ड्स इज द स्वीट स्पॉट. Be natural in delivery, as I said on the previous slide as well. बहुत ज्यादा over rehearsed लगने की जरूरत नहीं है. They know that you have prepared your answers. Everybody knows that you are prepared for the process. That tells them that you are being serious. But just mugging everything up and then going and trying to say everything in one go might not be the best thing, because then they will know that okay, इसके आगे वाले 2 questions के लिए भी शायद prepare किया ही होगा. So then they will ask you some question which will थोड़ा throw you off guard, and that is going to be very dangerous. तो वो बिल्कुल नहीं करना है. So be natural in your delivery.
लीव स्कोप फॉर क्वेश्चनिंग, कहीं कहीं पे ना हल्का सा पॉज ले लेना. सो यू माइट हैव सीन दैट इंटरैक्टिव कार्ड मैजिक ट्रिक जो होता है, राइट? आई एम श्योर यूट्यूब पे भी देखा होगा कि कोई तो एक मैजिशियन होगा जो ऐसे ऐसे करके कार्ड्स दिखाएगा एंड द मैजिशियन विल प्रेडिक्ट विच कार्ड यू हैव सेड. अब उसमें ना एक छोटा सा ट्रिक होता है. एक कोई तो कार्ड पे ना द मैजिशियन विल स्टे फॉर मे बी अ क्वार्टर सेकेंड मोर देन ऑन द अदर कार्ड्स, एंड द मैजिशियन नोस कि इसी कार्ड पे मैं रोक रहा हूँ, एंड वहां पे दे विल बी एबल टू प्रेडिक्ट कि ये करना है. एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे करना है तुम लोग. क्या करना है? यू हैव टू लीव स्कोप फॉर क्वेश्चनिंग. उसको सीधा एक सांस में बोलते जाओगे ना, सो दे विल नॉट नो वेयर टू स्टॉप यू. सो यू शुड हैव लॉजिकल पॉसेस इन बिटवीन, एकदम सटली उसको पॉज डाल देना, सो दैट यू आर सेइंग इट and maybe half a second or waiting before you start your next line, so that in case they want to ask you something about that particular bit, you are done then, you will be able to answer the question. तो एक था थोड़ा क्वेश्चनिंग के लिए थोड़ा स्कोप छोड़ देना. एंड नो योर आंसर इनसाइड आउट. ऐसे बिल्कुल भी मत होने देना दैट यू हैव डिजाइन समथिंग बट यू आर जस्ट रैम्बलिंग बिकॉज ऑफ विच यू से समथिंग इनएडवर्टेंटली जो तुमको नहीं बोलना चाहिए. ऐसे बिल्कुल मत करना. नो योर आंसर इनसाइड आउट. क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा. Make sure that you know all the nouns that you are mentioning. Make sure that you know all the names that you are taking. Make sure that you know all the profiles that you are mentioning. कंपनीज के नाम सब कुछ इनसाइड आउट पता होना चाहिए. इंडस्ट्री के बारे में इनसाइड आउट पता होना चाहिए, तभी जाके उसको इंक्लूड करना. नहीं तो डोंट से समथिंग दैट यू डोंट विश टू बी क्वेश्चन नाउ. तो ये सारी चीजें करनी है. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल शो यू सम सैंपल आंसर्स दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट योर आंसर शुड लुक लाइक. सो बैड आंसर का एग्जांपल है ये वाला. I want to do an MBA because it's the next logical step after engineering. Logical fallacy मिल गया. Many of my seniors did an MBA and are now in good jobs in a big company. बहुत ambiguity, right? Good jobs, subjective. Big company, subjective. And I have heard an MBA can help with that. I have heard. Convincing नहीं लग रहा. Can help. Uncertainty. I don't know much about management yet. क्यों नहीं पता यार? कर लेते पता. ऐसा नहीं है ना कि कल पता चला और आज कर दिया. नहीं. You have been on this journey since the last 6 to 8 months at least. पता कर लो क्या है मैनेजमेंट में होता है, बट पता नहीं किया हुआ है. बट आई फील इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ डिग्री दैट गिव्स मी बेटर अपॉर्चुनिटीज. फील नॉट रियली अ गुड वर्क. बेटर अपॉर्चुनिटीज अगेन सब्जेक्टिव इन नेचर. Besides, I have always wanted to study in a reputed business school. What is reputed? Right? And get the exposure it provides. I'm sure I'll figure out my specific goals during the program. Not really a good answer at all. I know a lot of you would be थोड़ा ऐसे cringe लग रहा होगा ये क्या आंसर बोल दिया, but this is an actual answer that people have provided to me at certain points in time. ठीक है, तो किसी ने actually आंसर मुझे भेजा था as a part of the SOP, and of course उसको correct करके काफी refine किया finally, but this is the first cut that I had, and not really a good answer है. मतलब क्या ही आंसर है इसमें, क्या ही कर लोगे. ठीक है, the faculty has no way to question you after you give this answer, so please avoid these kind of answers. Now I will show you an answer which seems to be a good answer, but it is not exactly a good answer. ये है, I want to pursue an MBA because I believe it will open up more opportunities for me in the corporate world. What kind of opportunities? Ambiguous. As an engineering graduate, I have developed strong technical skills. A lot of people believe in this, but I feel that I need to improve my management and communication skills to advance in my career. कैसे advance करोगे? करना क्या है career के अंदर पता नहीं, but advance करना है. ठीक है. An MBA will give me exposure to areas like finance, marketing, and leadership, which I currently lack. Why do you lack these things? Have you not studied anything on your own? क्या lack कर रहे हो उसके अंदर exactly? करना क्या है exactly? पता नहीं. I am also inspired by how many successful professionals I admire have an MBA. Caveat: there are a lot of successful professionals who do not have an MBA. फिर क्या करोगे उसका? I think it's the right way to fast track my growth. I think. Why do you think? नहीं पता. Learn about business. वो तो वैसे भी कर सकते हो. And move into managerial roles in the future. वो तो normally भी कर सकते थे. I am excited to gain new perspectives and learn from the diverse experiences of my peers in the program. What are you going to contribute? Peers contribute करेंगे, अच्छी बात है. What are you going to contribute to the college? बहुत सारे होल्स है इसके अंदर. दिस इज अ वेरी नाइस आंसर. ठीक है, अगर गूगल करोगे तो ऐसा ही कुछ आंसर मिलेगा. यू कैन टेक दिस आंसर, पेस्ट इट इन योर एसओपी एंड यू विल बी डन. बट द प्रॉब्लम इज दिस लैक्स पर्सनलाइजेशन. इसमें पर्सनल आइटम कुछ भी नहीं है. एवरीथिंग इज जेनेरिक इन नेचर. ये आंसर अगर कोई भी इंजीनियर बोल दे तो भी वो सेम आंसर होगा, उसमें कुछ चेंजेस होंगे नहीं. अवॉइड दिस काइंड ऑफ आंसर्स. A good answer will look something like this. As an engineering graduate, I have always been curious about how great ideas evolve into impactful business solutions. अब यहाँ पे you should know exactly which great idea are you talking about जिसमें impactful business solution भी हुआ. It could be anything. It could be food delivery. हो सकता है, right? So किसने सोचा था कि food delivery करेंगे उस पे you will be able to earn money? Nobody had thought of it, right?
कैब एग्रीगेटर्स नहीं सोचा था किसी ने, अर्बन कंपनी नहीं सोचा था किसी ने, बट ग्रेट आइडियाज इवॉल्व इनटू इंपैक्टफुल बिजनेस सॉल्यूशंस, तो इंपैक्टफुल बिजनेस हुआ आगे जाके, राइट? सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो एग्जांपल्स अपने दिमाग में हमेशा रेडी रखना इफ यू आर सेइंग समथिंग लाइक दिस. देन व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग माय कॉलेजेस टेक फेस्ट, तो मैं अपने पास लेके आ गया, मैंने टेक फेस्ट कभी तो ऑर्गेनाइज किया था. I led a team to secure sponsorships and exceeded our target by 20%. Now good, you did something, you led a team. ऐसे नहीं था कि तुमको किसी ने बोला कि भागो भागो करो और कुछ मिलेगा तो अच्छा है तुम्हारे लिए, ऐसे तो नहीं हुआ था. You did something on your own. Even if you didn't do something on your own, it's perfectly okay for you to tell them that I was driven and motivated on my own. I set this goal, this target for myself and I ended up overachieving it. It's a very good thing to say. By 20%. Numerically पता चलता है कि अच्छा overachieve किया है. Then this hands-on experience with negotiation and leadership ignited my passion for bridging technical expertise with business strategy. तो यहाँ पे मैंने थोड़ा business strategy के बारे में भी सीखा जो शायद कॉलेज के अंदर नहीं सिखाते थे, and that basically sparked my interest. उसके बाद मैंने क्या किया? During my internship at a manufacturing firm, I optimized production processes but was equally intrigued. So production process को optimize किया, which might have been my core technical duty, but was equally intrigued by how strategic decisions shaped outcomes. Example होना जरूरी है. कहाँ पे सोचा, किसने बताया तुमको कि strategic decision से outcome shape होता है, right? It reinforced my interest in understanding the bigger picture of operations management. ठीक है, might make some connection here and there. My final year project on renewable energy, again तीसरा example, further emphasized the importance of market insights and strategic planning and driving innovation. You can see कितनी जगह पे मैंने question पूछने के लिए स्कोप छोड़ा हुआ है. फर्स्ट लाइन में ही मेरे पास एक मैंने छोड़ दिया है, हाउ ग्रेट आइडियाज इवॉल्व इनटू इंपैक्टफुल बिजनेस सॉल्यूशंस. अगर वहां पे कोई मुझे पकड़ लेता है एंड दे स्टार्ट ग्रिलिंग मी, आई शुड डेफिनेटली हैव वन और टू एग्जांपल जिसके बारे में बोल सकूं. देन कॉलेज टेक फेस्ट, क्या हुआ था टेक फेस्ट में, व्हाट एग्जैक्टली वाज योर रोल, हाउ डिड यू एंश्योर 20%. अगेन आई हैव लेफ्ट स्कोप फॉर cross questioning. Then I'm talking about my internship. Again, I have left scope for cross questioning. उसके बाद final year project. Again, I have left scope for cross questioning. ये सारी चीजें मैंने की हुई हैं. I thrive in collaborative problem solving roles and believe an MBA will refine my skills, enabling me to bridge the gap between technology and business. Again, the same thing. Technology, business mix करना है मेरे को. 2-3 बार मैं ये बोल चुका हूं. So definitely this is something that is the crux of my answer. Enabling me to bridge the gap between technology and business. With India's industries evolving, I'm excited to contribute to impactful growth through well-rounded management expertise. लास्ट वाले डिलीट भी कर सकते हो, रख भी सकते हो, तुम्हारे लिए है क्लोज करना है कि नहीं करना है. Even if you don't close it, it's fine. You can leave it at technology and business and you should be fine. So this is an example that I'm talking about. ये personalized है, scope for questioning है, बहुत ramble नहीं कर रहे हो, कहीं कहीं पे statistic डाला हुआ है, specific है, you know why you want to do an MBA, you already have done something in that regard, and आगे जाके अपने को चीजों पे build करना है. This is basically a good answer that exists. So make sure that you are saying something like this when it comes to your why MBA wala question. If you have any doubts in terms of your answer, you wanted to run your answer past me, do put it in the comment section below. थोड़ा anonymous होके डालोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. I will try to tell you what you can improve in that particular question. ठीक है, so अपना आंसर बनाना पहले, उसके बाद you ask people for advice. Without answering your question, if you ask people for advice, I don't think people will be able to advise you very well. So make sure that you are doing that. ये purely interview के लिए वीडियो था. Whoever is going to go for an interview, I think will benefit from this particular bit. ऐसे डिजाइन करना होता है your why MBA. Stay tuned on this channel for more such videos. I'll be coming up with the answers to more such commonly asked interview questions. So make sure that you're subscribed to the channel. You have turned on all the notifications that are there. If you like this video, share it with your friends, comment below and let me know that you're enjoying this series that I have started with this particular video.